Jamuna Tira Purachari Jaya Radha Madhava Javiyari Jaya Radha Madhava Javiyari Gopi Jana Balava Girivare Jari Gopi Jana Balava Girivare Jari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaur Prema Nichalir Pavishno Vishupad Paramhamsa Paripakachastru Tata Sachichimat Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Srila Prabhupada Ki Gaur prayer number Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 29, Text 32, right? Yeah, 30. Yeah. श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 32 अध्याय 19 29 और श्लोक श्रृंखला 32 है। Let me do this. Atat अतः Yat यह Samsayat Chetat चेता Atat Yat Samsayat Chetat Atat Yat Samsayat Chetat अतः Tata Shriyan Sva Karmakrit Tata Shriyan Sva Karmakrit Muktas मुक्त Sangas संग Tato ततो Buyan भूया Muta Sangas Tato Buyan मुक्त संग तत भूया Adoga अदोग्ध Dharman धर्मं Atmanaha आत्मना Adoga Dharma Atmanaha अदोग्ध धर्म आत्मना Atagnyat Samsaya Cheta अतज्ञात संशय चेता Tata Shriyan Swakana Makrit ततः श्रेयान् स्वकर्म कृ Mukta Sangas Tato Buyan मुक्त संग ततो भूया Adoga Dharma Atmanaha अदोग्ध धर्मम् आत्मना Atagnyat Samsaya Cheta अतज्ञात संशय चेता Tata Shriyan Swakana Makrit ततः श्रेयान् स्वकर्म कृ Mukta Sangas Tato Buyan मुक्त संग ततो भूया Adogda Dharma Atmanaha अदोग्ध धर्म आत्मना Yeah. अत अत ज्ञात
द्वयश्च अर्थज्ञात संशया चेता अथ च संशया चेता ततः श्रेयान् स्वकर्म कृत् तथा श्रेयान् स्वकार्मकृत् मुक्त संग ततो भूयाम् योक्तसङ्गस्तथो भूयन् अदुग्ध धर्म आत्मनः तथाज्ञा संशया चेता तथा श्रेयान् स्वकार्मकृत् मुक्तसङ्गस्तथो भूयान् अदोग्धाधर्म आत्मनः तथो चेता तथो श्रेयान् स्वकार्मकृत् मुक्तसङ्गस्तथो भूयान् अचक्षुसंयेता स्वकामकृत् मुक्तसङ्गस्तथो भूयान् अदग्धर्मम् आत्मानः भूयान् अदुग्ध अदग्धा संशया चेता तथा ततः श्रेया श्रेयान् स्वकर्म कृत् मुक्त संग अतः ज्ञात संशया तदाश्रयान् स्वकर्म कृत् मुक्तसङ्गस्तथो भूयान् अदोग्धधर्म आत्मनः अत्र अतः संशया चालचेता चेता तथा ततः श्रेयान् श्रेयान् स्वकर्म स्वकामकृत् कृत् मुक्त तथा संग सङ्गस्तथो भूयान् दुग्ध धर्म शब्दार्थ इस प्रकार है, सभी मेरे बात कृपा करके दोहराएं। अर्थ ज्ञात वेदों का तात्पर्य समझने वाले की अपेक्षा संशय संशयां संदेह धीरा चेता वेदां छिन्न करने वाला तथा उसकी उसकी अपेक्षा श्रेयान श्रेष्ठ स्वधर्म अपने निर्धारित कर्म क्रिया कृत करने वाला मुक्त संग भौतिक संगति से मुक्त तथा उससे भूयान श्रेष्ठ अदोग्धा न करने वाला धर्मम भक्ति आत्मना अपने लिए अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जय वेदों का तात्पर्य समझने वाले ब्राह्मण की अपेक्षा वह मनुष्य श्रेष्ठ है जो सारे संशयों का निवारण कर दे, और उससे भी श्रेष्ठ वह है जो ब्राह्मण नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है। उससे भी श्रेष्ठ है
समस्त भौतिक कलमश से मुक्त व्यक्ति, इससे भी श्रेष्ठ वह शुद्ध भक्त है जो निष्काम भाव से भक्ति करता है। तात्पर्य: अर्थज्ञ ब्राह्मण उस व्यक्ति का सूचक है जिसने परम सत्य का सम्यक विश्लेषणात्मक अध्ययन किया हो और जो यह जानता है कि परम सत्य का अनुभव तीन भिन्न अवस्थाओं में ब्र- ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में किया जाता है। यदि किसी के पास इस ज्ञान के अतिरिक्त परम सत्य के विशेष विषय में उठाए जाने वाले संशयों को दूर करने की क्षमता हो तो वह श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि विद्वान ब्राह्मण वैष्णव समस्त संशयों को दूर कर दे, किंतु यदि वह वैष्णव नियमों को नहीं मानता तो वह उच्च पद पर आसीन नहीं रहता। उसे समस्त संशयों को दूर करने तथा साथ ही समस्त ब्राह्मण लक्षणों से युक्त होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो वैदिक आदेशों की प्रयोजन को जानता है, जो वेदों द्वारा अनुमोदित नियमों को व्यवहार में लाता है, वह अपने शिष्यों को इसी विधि से शिक्षा देता है, वह आचार्य कहलाता है। आचार्य का पद ऐसा है कि वह भक्ति करता है किंतु जीवन में ऊंच पद प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं रखता। वैष्णव सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त ब्राह्मण होता है। जो वैष्णव ब्रह्म विज्ञान को जानता है किंतु अन्य को इस ज्ञान उपदेश नहीं कर पाता, वह निम्न अवस्था में माना जाता है। जो न केवल ब्रह्म विज्ञान को जानता है अपितु अन्य को उपदेश देता है, वह द्वितीय अवस्था में रहता है। और जो न केवल उपदेश देता है, वह हर वस्तु को परम सत्य में और परम सत्य को हर वस्तु में देखता है। यह सर्वोच्च श्रेणी का वैष्णव है। यहाँ उल्लेख हुआ है कि वैष्णव पहले से ब्राह्मण रहता है। निसंदेह वैष्णव होने पर ही ब्राह्मण की पूर्ण अवस्था प्राप्त होती है। श्रील प्रभुपाद की जय। You understand that? Yes. I'm gonna read the I'm gonna read the English translation, then I'll speak. प्रभु जी अभी जो है अंग्रेज अनुवाद का उच्चारण करेंगे। Better than the Brahmanas who knows the purpose of the Vedas is he who can dissipate all doubts, and better than him is one who strictly follows the Brahminical principles. Better than him is one who is liberated from all material contamination, and better than him is a pure devotee
who execute devotional service without expectation of reward. Actually, Srimad Bhagavatam, Prabhupada describes as the graduate study श्रील of devotion. प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम को हमें कहाँ से सीखना चाहिए। The first foundational studies, Srimad Bhagavad Gita. पर जो बुनियाद है श्रीमद् भागवतम का शिक्षा का वो है And Sri Chaitanya Charitamrita is the postgraduate study. श्री चैतन्य चैतामृत जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन है। So in the Bhagavad Gita, that's the foundation for spiritual, that's our foundation for spiritual भगवत knowledge. गीता जो है बुनियाद है। And in the Bhagavad Gita, there's 5 tattvas that's described. भगवत गीता में 5 तत्व का वर्णन आता है। Anybody can tell me the 5 tattvas? कोई बता सकता है ये 5 तत्व क्या है? बताइए। So he has said ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल and कर्म। That's right, correct. हरि बोल। Right. So this Lord Kapila Dev's teachings, actually all throughout the Bhagavatam, there's so many discourses of great souls giving teachings and instructions throughout. So this particular series, actually this was a book called Teachings of Lord Kapila Dev that was put out. I don't know if you have, is that translated in Hindi? Yeah, it is translated in Hindi also. So this was a series of lectures that Srila Prabhupada put together. And it was based on Lord Kapila's teachings to her Devahudi. And this unique series was presented in lectures that was presented here in Mumbai in 1974. And Prabhupada spoke from the lectures starting from chapters 25 through 33. श्रील प्रभुपाद जी 1974 में यह श्रीमद् भागवतम के 23वें स्कंद के 25वें अध्याय से 33वें अध्याय तक लगातार लगभग 80 से भी ज़्यादा दिन रोज शाम को प्रवचन करते थे। उसी पे आधारित एक बीबीटी के द्वारा ग्रंथ निकला है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला, कपिल भगवान की शिक्षाएं देवती माता को। तो ये संवाद का हिंदी में भी हम प्राप्त करते हैं। ये जो है मुंबई में जो है जुहू मंदिर में प्रभुपाद जी दिए थे। I think they are available for people to go and hear. You can still go to the archives and listen to these series of lectures. So it'd be a very good suggest devotees to go and do that because they were spoken here. And those very profound lectures that's spoken in Mumbai. हमें बहुत जो है एक प्रकार से खुश होना चाहिए कि ये जो संवाद का वर्णन जो है प्रभुपाद जी मुंबई में किए थे, यहाँ पर हमारे बॉम्बे उस वक्त बॉम्बे था, अभी मुंबई है। The text begins with the words of Shanakarishi, one of the foremost sages of Naimisharanya. नैमिषारण्य के संतों के जो में उनके बीच में ये संवाद हो रहा है उसका वर्णन किया जा रहा है। He said that this Srimad Bhagavatam was originally spoken some 1,000 years ago, and the sages had already heard about Lord Kapila Dev from Srimad
Sutta Goswami. तो सूत गोस्वामी पाद से प्रश्न किया था सोना कृषि इत्यादि, और ये संवाद जो है सूत गोस्वामी पाद सोना कृषि इत्यादि के प्रश्न का उत्तर में दिया जा रहा है। And he defines the consciousness in both the conditioned and the liberated states. And he described the psychology of pure consciousness, and he also delineates the symptoms and characteristics of a sadhu. तो इस प्रकार से जो है चेतना का एक जिस प्रकार से उन्नति हो रहा है उसका वर्णन करते हुए यहाँ पे जो दर्शन है जो वैष्णव का शुद्ध भक्त का वो यहाँ पे बताया जा रहा है। He also explained that liberation is merely a preliminary stage of the attainment of bhakti. और यहाँ पे ये भी वर्णन आता है कि भक्ति के शुरुआत में कैसे कैसे लक्षण पाए जाते हैं। What's with the Devahuti? She's not an ordinary soul, and her husband Kadharma Muni, she actually she took two instructions. The first instruction she was given from her husband before he left. देवहूति कोई साधारण जीव नहीं है, देवहूति एक उन्नत वैष्णवी है। उनको दो बार उपदेश प्राप्त हुआ, एक बार उनके पति देव के ओर से, फिर दूसरी बार कपिल मुनि उनके बेटे के ओर से। And I just oh, glory, yes, oh, glory to your name. Oh, glory to your name. Hare Krishna. I always love this verse in the Srimad Bhagavatam in this canto, the 23rd chapter, the text 51, where she is inquiring from her husband. And that verse is Savam Tad Bhagavan Mayam Upovaha Pratistutam Atapi me Prapanaya Abayam Datum Arhasi. I'll translate it. She, Devahuti said, My Lord, you have fulfilled all the promises you gave me. ये संवाद में से प्रभु जी बता रहे हैं कि तीसरे स्कंद के 23वें अध्याय के 15वें नंबर जो श्लोक है वहां से वर्णन करते हैं, आपने अब तक मुझे जो भी शिक्षा दिए हैं उसमें से He said, Yet because I'm your surrendered soul, you should give me fearlessness. once again, Yeah. She says, Because I am your surrendered soul, yeah. क्योंकि मैं जो है एक शरणागत जीव हूँ, you should give me fearlessness. आप मुझे जो है अभयता प्रदान कीजिए। And Prabhupada said in the purport that you have given me all sorts of material comforts by your yogic power. प्रभुपाद जी बताते हैं कि आपने मुझे हर प्रकार का जो है सुविधा जो है जो शरीर के लिए चाहिए वो प्रदान किया। आप अपने योग बल के द्वारा इस ब्रह्मांड का सबसे श्रेष्ठ जो है शारीरिक जो है सुविधा मुझे प्रदान किए हैं। Then she said that now you are prepared to leave and go away. So you must give me one last award so that I may get free from the material condition of life. और पतिदेव से देवती माता निवेदन करती है, आप अभी जो है अब जीवन के अंतिम चरण के और प्रस्थान कर रहे हैं, मुझे छोड़कर जा रहे हो। अब मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे एक उत्तम भेंट देकर प्रस्थान कीजिए। So she was saying in that verse, apovaha has been fulfilled. Apovaha means has been fulfilled. In other words, her desires has been fulfilled.
Once again, you can repeat it again. Okay, a translation of apovaha means has been fulfilled. ओके, तो अपोहा का अर्थ होता है कि भय से मुक्त। Pratishtutam means promise. प्रतिष्ठितम का अर्थ होता है स्थित। Prapranaya unto one who has surrendered unto me. आप मुझे अभयता प्रदान कीजिए, मुझे जो है स्थित कीजिए, ताकि मैं जो है पूरी तरह से ऐसे ऐसे गुरु के शरण में जाऊं जो कि पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो। And the last one that's most important was abhayam, which means fearlessness. और आखिर में उनका एक निवेदन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण निवेदन है, और वो निवेदन है कि आप मुझे अभयता प्रदान कीजिए। Fearlessness is become free from the material conditions of birth, death, old age, and disease. अभयता का अर्थ होता है कि जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि के जो चक्कर है उससे हम मुक्त हो जाएं। And so Prabhupada also gives a lecture, and he states this verse many times in Srimad Bhagavatam. It's fifth canto, fifth chapter, text 18. And it's a very famous verse. Guru na yat swajano na yat. Pita na yat. Janani na yat. Daivam na tatsyan na patis chas sasyan. Namucha yidya samapeta mityum. So that means that throughout this verse, you see the word na sasyat, na sasyat, which means don't do it. What is that? Guru, Pita, father, Janani, mother, Daivim, demigod, Patis, husband. पांचवें स्कंद के पांचवें अध्याय के यह सुप्रसिद्ध जो शिक्षा है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब तक किसी को जो है पिता नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए, पति नहीं बनना चाहिए, राजा नहीं बनना चाहिए, अगर वो अपने पे निर्भर को भय से मुक्त नहीं करा पाता है। Namocha yadyasamapeta mityom. He said, if you can't deliver the dependence from this cycle, birth, and death, na sasyat, then don't do it. आप इस जन्म मृत्यु के जो चक्कर से मुक्त नहीं कर पाते तो आप जो है गुरु या ये उपाधि स्वीकार मत करो। So in this purport, Prabhupada was explaining the absolute truth. Of course, the three features of absolute truth was what's that verse in Bhagavatam 1, 2:11? Vedanti tattva's vidas tattvam yad jnanam avyayam brahmeti parmetmiti bhagavan iti sabhyate. परम सत्य का तीन स्तर का वर्णन किया जा रहा है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। And so within that, the 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 great souls, they are the ones who understand all three of those features of the Lord. और ये वैष्णव जो हैं वो तीनों भगवान का यह परम सत्य का तीनों स्तर से अवगत हैं। In the 15:15 Bhagavad Gita verse, the second half of the verse, Vaidesh Savaya Ham Eva Vidyo, Vedanta Krit Veda Vid Eva Chaham, which means of all the Vedas, I am to be known. और 15वें अध्याय के 15वें नंबर श्लोक में, उस श्लोक के दूसरे भाग में वर्णन आता है कि सारे वेदों के द्वारा मुझे जानना होता है या मुझे जानना चाहिए।
So Srila Prabhupada was explaining that the highest Brahmana are actually the Vaishnavas because the Vaishnavas know the Vedanta and also they're completely surrendered to the Lord. श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार से ब्राह्मण का जो सबसे उच्चतर स्तर है वो है वैष्णव। जो वैष्णव जो है ब्राह्मणों के सारे गुण भी रखते हैं और शास्त्र के सार को भी जानते हैं और भगवान को जानते हैं। In the previous verse, it was described that the human beings, the society was divided to quality and the best work of the four social and spiritual orders. पिछले श्लोक में जो है चार जो है प्रकार के जो मनुष्यों का वर्णन आता है जो आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करना चाहता है। But Krishna says, what's that? Chaturvayam ashastistam guna karma vibhagasha tasya kataham apimam vidi akartaram avyayam. In other words, the according to the modes of material nature and work associated with it, he said that the four divisions of human society was created by me. तो चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागस, तो ये भगवान जो है इस प्रकार से चार विभाजन बनाते हैं, वो गुणों के अनुसार होता है। The unique thing about this, the book of teachings of Lord Chaitanya, is that they put together those series of lectures from Prabhupada, and they did another one similar to that was the teachings of Kunti. तो ये कपिल मुनि के शिक्षाओं के विशेषता यह है कि श्रील प्रभुपाद जी के विस्तार में इस शिक्षाओं के ऊपर प्रवचन है। इसी तरह से कुंती महारानी के जो प्रार्थना है उसके ऊपर भी प्रभुपाद जी के खूब सारे जो है प्रवचन है। And I used the same format when I put together the book. Anyone who's taken birth as a human being in Bharat Bhumi, India, I used the same format that being a musician did that kept the theme and used all Prabhupada's words according to his teachings and information based on that theme. Anybody who's taken birth here in Bharat Bhumi. तो So तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट बीबीटी ने कपिल मुनि के शिक्षाओं के ऊपर एक लेख निकाला, फिर कुंती महारानी की शिक्षाओं के ऊपर लेख निकाला, उसी तरह के विधि को पालन करते हुए भारत भूमि मनुष्य जन्म होइलो जार, इसके ऊपर प्रभु जी हिज ग्रेस शंभु प्रभु ने एक ग्रंथ का लेख किया है और आज जो है वो बीबीटी के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। because most people here in this country, they really don't have a clue how fortunate they are. Once again, Most, people, most people, most people in India, they don't have a clue how fortunate they are. क्योंकि भारत के जो प्रजा है वो नहीं जानते हैं कि वो कितने भाग्यशाली हैं, Because they have already put in the work. क्योंकि उनको हमेशा दबाया गया रखा गया था और उनको केवल मेहनत कराकर उनसे मेहनत जो है शारीरिक श्रम जो है लिया जा रहा था। To take birth in India, in Bharat Bhumi, it's not a cheap thing. भारत भूमि में किसी से
किसी से शारीरिक श्रम लेना कोई साधारण चीज नहीं है। Actually, I did this research was a culmination of 20 years, 20 years of studying this particular subject matter only. So I put it together. Actually, I know I did only scratch the surface, but this was 20 years of every year we would get together, and I was put my research of this subject matter to learn how fortunate people who take birth here are. ये जो लेख प्रभु जी ने संकलन किया है, इसके पीछे 20 साल का जो है कड़ी मेहनत और अध्ययन है। और ये अध्ययन प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पे आधारित है, और उसमें यही बात खोज किया जा रहा था कि भारत भूमि में जो मनुष्य जन्म ले वो लोग कितने भाग्यशाली हैं। So it's like when I travel around the country and talk to people, um, I come to realize that it's like a race. You know, when you're in a race, and then in not too far distance is the finish line. Because when you take birth in Bada Bhumi, that is understood that you put in the work, agata sukriti from previous lives of work. So you put in the work. तो ये इस प्रकार से समझा जा सकता है कि आप लोग ने स्पर्धा देखा होगा दौड़ का, जैसे रनिंग रेस होता है, तो उसका जो है अंतिम, उसको फिनिश लाइन बोलते हैं। अगर फिनिश लाइन वो है, तो जो भारत भूमि में जन्म लेते हैं वो फिनिश लाइन के बहुत नजदीक हैं। But they don't finish. They, they don't finish. They don't take advantage of it. पर I, वो लोग जो है फिनिश लाइन नजदीक है, पर वो फिनिश लाइन की ओर भाग नहीं रहे हैं, वो उसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, वो खत्म नहीं कर रहे हैं अपने रेस को। so we're here to encourage people to finish the job. You put in the work, now finish the job. और भारतवासियों को शारीरिक श्रम में लगा दिया और आध्यात्मिकता से उन्हें वंचित किया गया, इसीलिए वो फिनिश लाइन को स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। Because there's no guarantee that they get a human form of life next time around. No guarantee. और No guarantee. ये मौका छूट गया तो कोई गारंटी नहीं है कि फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। So they're also going to translate in Hindi, Bengali, I think in Tamil as well. और बीबीटी के पास से ये जो है लेख अंग्रेजी में है लिखा हुआ है, वो जाएगा, वो हिंदी में अनुवाद किया जाएगा, बंगाली में अनुवाद किया जाएगा और तमिल में भी अनुवाद किया जाएगा। And also the price will come down. और क्योंकि बीबीटी इसको बहुत छापेगा, तो इसका जो मूल है, इसका जो धन राशि है, प्राइस है, वो कम हो जाएगा। Yeah. So we want to encourage everybody to take advantage of these words of Prabhupada and help others to see how fortunate they are. Because if they, if someone knows that they've already done something good for themselves, but don't know it, and you know this, they will be grateful by someone telling them that. हमारा आप सबसे निवेदन है, ये जो लेख है आप जरूर लीजिए, औरों को जरूर दीजिए। जब सामने वाला इसे देखेगा, पढ़ेगा, तो उनको महत्व पता लगेगा कि वे कितने भाग्यशाली हैं। In that verse, Bharata Bhumi Teholya Manusha Jamajara, Jama Satakakari, Karapada Upakara. इस श्लोक में You notice he never said Indian,
Jane, fat, skinny, Hindu, Muslim, Christian, black, white. He never said any of that. He said minutia. अगर ध्यान से आप इस कथन पे ध्यान रखोगे तो शब्द जो इस्तेमाल किया है वो ये नहीं कि हिंदू, जैन, मोटा, पतला, ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया। मनुष्य का मनुष्य शब्द जो है इसका प्रयोग किया गया है। So the human being, he said human beings. This information is made for you. ये मनुष्यों के लिए, जो मनुष्य जो है, जैसे हमारे पास जो है, हम मनुष्यों के लिए ये भारत भूमि के लिए, मनुष्यों के लिए ये उपदेश है। No, just think about it. You have a direct order from the Lord Himself to all of you. सोचिए, सोचिए, हमें एक डायरेक्ट ऑर्डर मिल रहा है, वो भी भगवान से। इसके पर विचार कीजिए। And all we have to do is, like Lord Chaitanya said, pada upakara, pada upakara. और आगे बता रहे हैं कि सार्थक करके करो परोपकार, औरों का भी उपकार करना चाहिए। And by doing that, we'll please Prabhupada, acharyas, the devotees, and everybody. और भारत भूमि में जो भी हैं, प्रभुपाद जी हैं, गुरुजन हैं, आचार्य जन हैं, वे सब जो है भारत भूमि से आते हैं। See, because I realized from this book that if people would really realize how fortunate they are, then they will slightly make a change in their habits in their life. और ये किताब अगर भारतवासियों के हाथ लगेगा, वो समझ जाएंगे वो कितने भाग्यशाली हैं, और वे अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, आध्यात्मिकता और बढ़ेंगे। So anyway, any questions? और ये सुंदर भेंट है प्रभु जी की ओर से। अब आगे किसी का कोई प्रश्न है तो उठा सकते हैं, हाथ ऊपर करिए और प्रश्न पूछ सकते हैं। Hare Krishna, I have a question. So thank you very much for this wonderful presentation. And the question is, Bharat Bhumi Manushya Janma Hole Jar. This is based on teachings of Srila Prabhupada, lectures and books which you have compiled. Right. Yeah. Okay, okay. And I would like to understand. See, my mindset was, what can I say that Prabhupada hasn't said? Okay, Better for them to hear what he say okay, yeah, than what I'm saying. yeah, Be more powerful. In fact, what happened was when I was putting this together, I had my own title. yeah. I had my own title. The title was uh, "Fortunate, Unfortunate Souls" of Bharat Bhumi. Okay, But one of the God brother, he suggested, why don't I use a quote from okay, Prabhupada? okay. I'll just translate so that Okay. everybody can Yeah. absorb it. तो मेरा प्रश्न यह था कि आपने सुंदर यह प्रवचन दिया, इसलिए धन्यवाद। और ये लेख आपने जो लिखा है, ये लेख के बारे में मैंने प्रश्न किया कि प्रभुपाद जी के शिक्षाओं पे आधारित, प्रवचन के आधारित और उनके प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ से आधारित ये जो है आपने लेख लिखा है। तो प्रभु जी का उत्तर यह है कि कहा कि इस लेख में मैंने ध्यान दिया कि प्रभुपाद जी की शिक्षा मैं प्रस्तुत करूं, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले उन्होंने इस ग्रंथ का, इस लेख का नाम दिया था भारत भूमि के भाग्यशाली और अभाग्यशाली जीव, फॉर्चुनेट एंड अनफॉर्चुनेट सोल्स ऑफ भारत भूमि। पर उनके गुरु भाई ने कहा कि आप प्रभुपाद जी के शब्दों को दोहराओ, इसमें बल है। तो उन्होंने
इस ग्रंथ का जो लेख है बदल दिया और नाम दिया भारत भूमि मनुष्य जन्म होइला जार। Yes. So also, I'd like to point out last year when I originally when I came, you know, when the small publisher published the books, they always want to put the author's bio on the back. Yes. But I realized it's not about me. It's Prabhupada's words. So I told him to take it off and put the quotes Okay. on the back. फिर दिस इज द सेकंड एडिशन। Just a second, yeah, सेकंड है तो yeah. पहली बार जब इस ग्रंथ को लिखा तब किताब के पीछे में लेखक का वर्णन आता है, तो अपने बारे में लिखा था, उनका एक छोटा फोटो भी था। यू कैन शो दैट। ये पहला एडिशन था, This दिस is इज द फर्स्ट वन। first one, तो बाद में उनको and this पता is लगा second. कि मैं अपने बारे में क्यों लिखूं, और प्रभुपाद जी के भी जो बताए हुए बातों को वहां पे कोट किया था। आज जो है दाहिने हाथ में जो बुक है जहाँ पे फोटो नहीं है प्रभु जी का, इसमें प्रभुपाद जी का कथन है। तो ये किताब जो है बीबीटी ने स्वीकार किया। बीबीटी कोई साधारण लेख को स्वीकार नहीं करते हैं। तो यानी कि इनका जो लेख है बहुत ही प्रामाणिक है, तब जाके बीबीटी बहुत ही टटोल कर लेते हैं, बहुत परखते हैं। तो इनका मेहनत जो है वास्तव में बहुत ही प्रामाणिक है। हरि बोल। So now the third edition, the BBT put together, they also are including the two pictures और बीबीटी जो है in color, because that's what I originally had. I originally had it for the to be color, या but तीसरा जो प्रकाशन होगा, तीसरा एडिशन होगा, उसमें बीबीटी जो है उसे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जो था अंदर, उसको कलर फोटो में करके देंगे और कम दाम में देंगे। रीबो। yeah, that's going to be in the and then the at the end there's quotes in the chapter of jewels of instructions. These are quotes from Prabhupada about India. In fact, can I read one? Once again? I'm gonna read one. I'm gonna read one. Yeah, please. You translate it. Okay. अपने किताब के जो आखिर के पेज में जो प्रभुपाद जी का कथन लिखा है उसका उच्चारण करेंगे। He says that this should be India's mission. India hasn't got to learn from anywhere else. Everything is there. Let him understand the whole philosophy of life perfectly and distribute this. This is India's mission. ये भारत देश, प्लीज गिव मी दैट। प्रभुपाद जी का कथन है, दिस शुड बी इंडियाज मिशन। ये भारतवासियों का जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इंडिया हैजंट गॉट टू लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स। भारतवासियों को और कहीं से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ यहाँ पर है। लेट हिम अंडरस्टैंड, भारतवासियों को इसे समझना चाहिए कि सारा दर्शन जो है जीवन के बारे में बहुत ही सुंदर रूप से प्रस्तुत किया गया है भारत के शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में। इन ग्रंथों का वितरण कीजिए। ये भारतवासियों का लक्ष्य होना चाहिए, मिशन होना चाहिए। हरि बोल। Okay, read the second one. सेकंड वन आई शुड रीड। तो दूसरा जो कथन है उससे भी बहुत जो है तगड़ा जो है कथन है। हैव गॉट यू हैव गॉट so exalted knowledge in India, you have kept it packed and you are going to beg from others. आपके पास इतना सुंदर उत्तम कोटि का ज्ञान है इस भारत देश में, पर आप उस ज्ञान को जो है पैक करके रखे हो
उसे बांध के रखे हो और आप पाश्चात्य देश में जा रहे हो भीख मांगने के लिए, टेक दिस नॉलेज ऑफ भगवत गीता, ये भगवत गीता के इस ज्ञान को लीजिए, इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए और अपने जीवन को सफल कीजिए, सार्थक कीजिए और इसका विस्तार कीजिए और सारे जगत का परोपकार कीजिए। ये मैं चाहता हूं। ये श्रील प्रभुपाद की। Yeah. फिर आगे थर्ड वन, यू वांट थर्ड वन, द थर्ड Third कोट। one, yeah, please. ओके, आई विल रीड इट। ओके, तीसरा में कहते हैं, एनी इंडियन, एनी मैन हु हैज टेकन बर्थ इन द सॉइल ऑफ भारतवर्ष, इंडिया हैज got special duty, he has got a special duty, and that duty is to spread Krishna You consciousness. see how he says on the soil, Yes, the soil, that soil. the soil of Bharat. तो यहाँ पे बताया जा रहा है, जो भारत, जो भी भारतीय है, जो भी भारतीय है, जो भारतवर्ष के मिट्टी में, मिट्टी में जन्म लिया है, जो भी भारतवर्ष के मिट्टी में जन्म लिया है, उनके लिए एक विशेष कर्तव्य है। और वो कर्तव्य यह है कि वो कृष्ण भावना भावित आंदोलन का जो है विस्तार करे। श्रील प्रभुपाद की। Yeah. And the द फोर्थ वन, last one, last one. our India is not meant for exploiting others, doing good to others. That is India's mission. हमारा भारत जो है औरों को ठगने के लिए, हमारा भारतवासी, हम भारतवासियों को का कर्तव्य है, क्षमा करें, हम भारतवासियों को चाहिए कि हम औरों को ना ठगे। भारतवासी का जीवन औरों को ठगने के लिए नहीं, अपितु औरों का भला करने के लिए, औरों का परोपकार करने के लिए। यह है भारतवासियों का लक्ष्य, भारतवासियों का मिशन। Our teachers, our acharyas do not teach us go and exploit others and bring money. That is not India. हमारे गुरुजन, हमारे आचार्य ये शिक्षा नहीं देते हैं जाओ औरों को लूटो और पैसा लेकर आओ। ये भारतवासियों का कर्तव्य नहीं है। भारतवासियों का कर्तव्य है कि वे भारत का कृष्ण भावना भावित आंदोलन का ये संदेश औरों को दे, ना कि औरों को ठगे। श्रील प्रभुपाद के। Yeah. So help, help me, help us to help these fortunate souls here in Bada Boomy realize their fortune and help them to go back home, back to Godhead. हमें चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं और औरों को ये किताब दें ताकि वो भी उनको भी पता लगे कि वो कितने भाग्यशाली हैं और उन्हें सहयोग करें, मदद करें बैक होम, यानी कि वापस भगवत धाम को वो प्राप्त करें। श्रील प्रभुपाद के। Jai. All glory to God. Thank you. हिज ग्रेस Okay. शंभु प्रभु के। Jai. गौर हरि प्रेमानंदे। Good. Here's a- भारत भूमि मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करे करो परोपकार। here's the question. Anyone has? Maharaj. Maharaj. या He has the question. या आपका एक प्रश्न है। This book, Prabhuji, you have uh, this book you have written like you are saying that it is a result of 20 years of research. So is it kind of like comparison of Western uh, condition and Indian condition like that you have written? I am just asking the introduction of the book. I am saying in this book, you are saying that you have written the research work of 20 years. Yeah, research Prabhupada's teachings of this subject matter. See, I'm a musician. I play music. And so, in as an artist, generally, when you write a song, generally, the song is the song is about
the subject matter. So what I did, I kept all the information Prabhupada spoke about this subject. It's all about this subject matter. So sometimes when they write a book, they might go off on tangents, say other things. But I didn't do that. I kept the theme. Anyone who takes birth as a human being in Bharat Bhumi. So all the information based on Prabhupada's teachings and instructions is in there. तो मेरा प्रश्न ये था कि प्रभु जी आपने जो 20 साल का जो रिसर्च किया है तो इसके अंदर क्या आपने इस प्रकार कुछ लिखा है कि जो पश्चिमी जगत और भारतीय जो संस्कृति है उसका जो कंपैरिजन उसका कुछ वैसा कुछ करके लिखा है तो प्रभु जी कह रहे हैं कि मैंने जो प्रभुपाद जी की बुक्स जो है उससे मैं बिल्कुल भी इधर उधर हिला नहीं हूँ प्रभुपाद की बुक में जो है स्ट्रिक्टली उसी में से जो है मैंने इस सब्जेक्ट ये जो विषय जो है इससे संबंधित करके जो भी प्रभुपाद जी ने लिखा है उस सबको इस किताब के अंदर संकलित किया है Right. Thank you. So actually, when I go back to, I'm leaving Monday. When I go back to Srirangam, they're sending me the final version. Okay. And then after that, all temples all over the world can start Okay. ordering. हरि बोल. So अब प्रभु जी जो हैं सोमवार को यहाँ से प्रस्थान करेंगे और जो है ये ग्रंथ जो है तमिल में भी प्रकाशित होगा. तो you have these books so that we can tell. So it will come after printing done in BBT or Yes, so what they're gonna do, I'm gonna give the the information from Brindavan, and they can order, and then they'll start sending them out. okay, fine. Like that. Yeah. सो प्रभु जी जो है अब आगे प्रस्थान करेंगे और इस किताब को तमिल में प्रकाशित करेंगे और जो है फिर आएंगे तो हमको ये ग्रंथ प्राप्त होगा. यू हैव दिस बुक्स कॉपीज हियर सो दैट डिवोटीज Yeah, कैन I have some. I have some. I have two here. सो They यू can हैव put them टू in. यू हैव टू एट प्रेजेंट. Yeah. दो किताब है केवल दो भाग्यशाली जीवन को प्राप्त होगा. व्हाट इज द प्राइस यू आर Well, different price. They print here, it'll be 108. वन 108 रुपये शुल्क केवल ये है. That's retail price. Of course, for the temples, they don't get a wholesale price. ओके. They'll get a wholesale price, and the book distributors they Yeah. also get a wholesale ये price. 108 जो है सेल करने वाला रेट है. अगर मंदिर जो है इसे लेंगे तो होलसेल में मिलेगा. Yeah. तो जो दो कॉपी है जो भाग्यशाली जीव हैं इसे ले सकते हैं. एक है आनंदमय केशव प्रभु. ही वांट्स वन बुक. 108 रुपया आपको देना पड़ेगा. Okay. और दूसरा किसको चाहिए? आपका हाथ पहला उठ गया. तो Yeah. ठीक है. So you all can go and take signature. अभी आप लोग जल्दी लीजिए नहीं तो खत्म हो जाएगा. Yeah. So one copy for this brahmachari and one for that grastha Vaishnav. There is one more copy here. Give it to Prabhuji. No? I got one copy. मुझे एक कॉपी मिल गया. So तीसरा और एक कॉपी है. और एक कॉपी है. किसको चाहिए? So he is the third one. Okay. हरी बोल. 108 रुपया दीजिए. I have to get. हरी बोल. I have them at my house. I'll bring it back. Okay. I have them. So at least you take 3 and then. तो इस ग्रेस शंभु प्रभु का आभार प्रकट करते हैं. सुंदर रूप से हमको प्रोत्साहित किए हैं. हमें बताया कि भारत में जन्म लेने का महत्व क्या है. प्रभु जी का आभार प्रकट करते हुए एक बार हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. इस ग्रेस शंभु प्रभु की जय. भारत भूमि मनुष्य जन्म होल जार की जय. No, this is the second. The latest edition hasn't been printed yet. Not yet. Yeah, they're finishing up. By the end of the month, it'll be ready to roll. Yeah. But
this will be a collector's item. These be collectors because this won't be like you won't get this no more. So this will be like very rare. Okay. You? Your name? Spell for me, Prabhu. Spell A. Mhm. Oh, two A's. Okay.